Good morning, children. Class 6 Science Chapter 3 Fibers to Fabric. Now, today we will start with introduction. How clothing develops. In ancient times, people used big leaves of trees, barks of trees, animal skin, etc. to cover their body. आदि मानव के पास पहले जब कपड़े नहीं होते थे तो वो पत्तियाँ, पेड़ों की छाल और पशुओं की स्किन, चमड़ी को कवर करने के लिए उपयोग में लाता था. When man began to settle down in communities, he began to tie together wigs, grasses, leaves, animal skin, fur, punk, etc. into mats and clothes. धीरे धीरे उसने आदि मानव ने पत्तियों को आपस में जोड़कर उन्हें कपड़े के रूप में शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया. Later, when the needles was invented, सुई की खोज होने के बाद people started stitching these fabrics into different shapes to suit their body and thus clothes evolved. सुई की खोज होने के बाद में सिलाई शुरू की गई और अलग अलग तरीके के कपड़े जो उनकी बॉडी को एज पर द सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट सूट कर सके उस हिसाब से सिला गया. नाउ एज वी नो दैट वी हैव अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग चॉइसेस फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दे आर वेरी वेरीड इन चॉइसेस, कलर्स, डिज़ाइन एटसेट्रा. इन फैक्ट वी हैव मूव्ड फ्रॉम सिंपल क्लोथिंग टू फैशनेबल क्लोथिंग. जैसे जैसे समय ने तरक्की की, मॉडर्नाइज हुए, हम एडवांस होते गए, हमने क्लोथिंग, हमारे पहनावे में बहुत सारे चेंजेस किए. इन एंशियंट इजिप्ट, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. इन एंशियंट इजिप्ट में कॉटन, कपास और फ्लैक्स की खेती शुरू की गई और कॉटन से कपड़े बनाए गए. नाउ वी विल स्टार्ट main portion of our chapter, that is fibers. Now here you can see evolution of clothes from animal skin, woven material, silk, etc. Now we'll start. We find that at the end of a thread the yarn split up into strands. You can see yarn and small, very thin, very delicate fiber is also there. The thin strand of thread that we see as in the picture are made up of still thinner strands called fibers. Now in general definition we can see or say like hair like substances, that is the basis of all yarn and fabric. Now what is yarn? Fibers that are twisted. Fibers, तंतुओं को, रेशों को जब हम घुमाकर आपस में मिलाते हैं तो yarn बनता है. Now fabric, this is also very important. Material that made by joining yarns through weaving, knitting and felting forms fabric, कपड़ा बनता है. Now here you can see from the pictorial diagram, fibers to yarn, yarn to fabric. All fabric is made up from fiber, either natural or synthetic. Natural जो प्रकृति से मिला हुआ फाइबर है, रेशा है. सिंथेटिक जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, जिसे मानव ने या मनुष्य ने बनाया है. The fiber is processed and twisted into yarn. The yarn is then woven or knit into fabric as shown in the picture also. Fiber, yarn and then fabric. Individual fiber is shown. When individual fibers mixed or twisted together they form yarn. When yarn twisted together they form fabric and further textile. Now we'll see few types of natural plant fibers
There are two sources of fiber. First one is the natural and second is the synthetic. Under natural fiber, two categories are there: plant fiber and animal fibers. Now you can see here, we will consider one example of natural plant fiber, that is linen. Linen, our bed sheet, home bed sheet is made up of linen. Properties: very hard wearing, cool next to the skin, strong, absorbent, it absorb water, सोख लेता है, creases easily, dull luster, चमक कम होती है, breathable, हवा पास होती है इसमें से. Now the fabric names of linen are duck, mattresses, sticking, huckbuck and holland. These are the categories of the linen. Now the use of linen is lightweight summer clothing, towels, sheets, tablecloths, etc. Advantages and disadvantages of linen are: strong when wet, this is the advantage; very hard wearing, highly absorbent, so dyes easily, absorb कर लेता है पानी को, तो हम लिनन के कपड़ों को कलर कर सकते हैं. डाइज मीन्स कलरिंग विथ केमिकल और एनी अदर सब्सटेंसेस. कंफर्टेबल टू वियर, पहनने में आसानी होती है, आरामदायक होता है. बट डिसएडवांटेजेस: एक्सपेंसिव एंड क्रीजेस, जल्दी से इसमें मोड़ पड़ जाते हैं, सिकुड़न आ जाती है. नाउ सेकेंड नेचुरल फाइबर, that is second category is animal fiber. Under natural is silk. Silk is the natural animal fiber. Properties of silk are absorbent, soft and comfortable. मलमल का कपड़ा, बहुत ही रेशम का जो कपड़ा है बहुत आरामदायक होता है. Cool but also warm and insulating when worn in layers. नेचुरल सीन एंड लस्टर, चमकीला होता है. स्ट्रॉन्ग व्हेन ड्राई, ड्राई होने पे स्ट्रॉन्ग होता है. नाउ द डिफरेंट फैब्रिक्स ऑफ सिल्क नोन कैटेगरीज आर ड्यूपियोन, शिफॉन, क्रेपे, डचेस, ऑरेंजा, टैफेटा. यूजेस ऑफ सिल्क: luxury clothing such as lingerie, evening and bridal wear, knitwear, soft furnishing. Now the advantages of silk are: soft, smooth and lustrous, चमकीला, मुलायम सिल्क होता है. Drapes well, comfortable to wear next to the skin. Now the disadvantages of silk are: expensive, कैन बी वीक व्हेन वेट, गीला होने पे नरम हो जाता है कपड़ा. मे क्रीजेस इजीली, मुड़ जाता है पहनने के बाद. नाउ विल स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ फाइबर. इन जनरल, अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर. Fibers are of two types, as we have seen: natural fiber as well as synthetic fiber. The fiber which are obtained from natural sources like plants and animal are called natural fiber. प्राकृतिक तंतु या रेशे जो हमें पौधों या जानवरों से प्राप्त हों, they are known as natural fibers, प्राकृतिक fibers. Natural fibers are a collection of tiny threads obtained from plants and animal. Natural fiber क्या है? टाइनी, पतले, महीन रेशे हैं जो हमें पौधों और एनिमल से मिलते हैं. एग्जाम्पल: कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लैक्स एंड जूट. नाउ फ्लैक्स एंड जूट आर द नेचुरल फाइबर्स obtained from plants, whereas wool that we are getting from sheep and silk, we are getting silk from silkworm, are the natural fibers obtained from animal sources. We'll see here
Fibers used to make fabric may be natural or synthetic. Synthetic means artificial or man-made. Fibers that are obtained from plants or animal are called natural fibers. These we have seen. Now we'll see fourth line. Fibers that are made by man from chemical substances are called synthetic fiber. ऐसे धागे या तंतु जिसे मानव ने केमिकल की सहायता से बनाया है, रसायन की सहायता से बनाया है, they are known as synthetic fibers. Examples are nylon, rayon, polyester and acrylic. Let us learn more about plant fibers. Now here jute is a fiber obtained from the stem of a jute plant. Jute is mainly grown in West Bengal. This is a natural plant fiber. Jute is the natural plant fiber mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam because it requires more water and cultivated during the rainy season. Jute plants are harvested from the fields when they are at flowering stage. जब उनमें फूल आने लगते हैं तब उनकी कटाई कर ली जाती है. The stem are harvested. Jute plants are immersed in water for few days. जूट की जो तने हैं, जो डंडी ऊपर निकली हुई है ज़मीन से, जिस पे पत्तियां लगी होती हैं, उसको पानी में डुबो दिया जाता है, दबा दिया जाता है पानी के नीचे, ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए, मुलायम हो जाए. ड्यूरिंग दिस टाइम द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर लेफ्ट बिहाइंड. द जूट फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय हैंड. कुछ दिनों बाद जब पानी से तनों को निकाला जाता है तो वो तने पानी पाकर फूल जाते हैं, जिससे रेशे बाहर आने लगते हैं. जूट इज स्ट्रॉन्ग प्लांट फाइबर. जूट फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स. जूट bags are used as shopping bags that as well as for storing grains. जूट की बोरे बनाए जाते हैं, अभी हम देखेंगे इसके बारे में. The outer covering, now coir is also there. First we will finish jute. Jute example is given. Jute, as you can see, jute fiber is obtained from the stem of a jute plant grown in West Bengal. Now we'll see flax. Flax is also obtained from plant as shown in the figure. Fibers obtained from the flax plants are called flax fiber or flax. Now it is also obtained from the stem. Linen, the cloth made of stem of flax is called linen. Now we'll see cotton. Cotton picture, yeah. Cotton, white colored ball like structure. Cotton fiber is also known as cotton wool. Cotton fibers comes from the cotton plant, which are grown in the field by farmers. Cotton crops is usually grown at places having black soil and warm climate. जहाँ पर काली मिट्टी होगी, गर्म जलवायु या क्लाइमेट होगा, गर्म हवाएं होंगी, वहाँ कॉटन का कल्टीवेशन होता है. इन इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, these are the state where we are getting black soil. Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat also, they are cultivating cotton. The fruits of cotton plants are of size of lemon. Fruit, अब यहाँ पे फिगर में आप देखोगे तो वाइट कलर के जो कॉटन निकले हुए हैं, ये लेमन के जैसे फल में से निकलते हैं, कवरिंग से बाहर आते हैं सूखने के बाद. After maturing, the cotton balls burst open. Seed covered with white soft cotton fiber. A field of cotton plant which is ready for picking up cotton look like a field covered with snow. अब यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं, ये जो वाइट है कॉटन है, ये सीड को कवर किए होता है. बीज जो होते हैं अंदर होते हैं. जब ये कॉटन के जो प्लांट हैं, इसके जो फल हैं सूख जाते हैं तो वो कवरिंग अपने आप फट जाती है और कॉटन बाहर की तरफ आ जाता है.
Now we'll see synthetic fiber और मैन मेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर, तीनों नाम एक ही के हैं। आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स, मजबूत होते हैं किससे? नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर लास्ट फॉर हाउ मच लॉन्गर टाइम? वी कैन डिस्टिंग्विश, वी कैन डिफरेंशिएट, वी कैन कंपेयर बिटवीन द कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर्स बाय परफॉर्मिंग द बर्निंग टेस्ट। हम जलाकर भी, पूरे कपड़े को नहीं जलाना है, बट उनके धागे को या रेशे को थोड़ा सा पीस या सैंपल लेके टेस्ट कर सकते हैं। नाउ सम ओके, fibers are also made from chemical substances, as we have seen, which are not obtained from natural sources. The fiber which are prepared from chemical substances in industry are called synthetic fiber. For example, nylon, polyester, acrylic, etc. Also known as artificial fibers or manufactured fibers. Synthetic fibers are used for making fabrics, making carpet and robes. Now we'll see one by one. Synthetic fiber, that is rayon. Rayon is a type of synthetic fiber obtained from the wood pulp, and some chemical mixture is also mixed in this. That is why this comes under synthetic fiber. वुड पल्प में केमिकल को मिलाया जाता है, इसलिए सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में रेयॉन को रखा गया है। रेयॉन फैब्रिक इज सॉफ्ट, एब्जॉर्बेंट एंड कंफर्टेबल। इट इज़ ईजी टू डाई, कलर कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कलरिंग इस पे रेयॉन पे की जा सकती है ताकि अलग अलग कलर के लुक्स इसे मिल सके। इट इज़ ईजी टू डाई इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन to make bed sheets. Rayon is mixed with wool to make carpets. Now we'll see second synthetic fiber, that is nylon. This type of synthetic fiber is obtained from the coal, water and air. Nylon is very lustrous, easy to wash and elastic in nature. खींच सकते हैं इसे, चमकीला होता है। It dries quickly and retain its shape. Nylon finds its application in seat belts of car, sleeping bags, socks, ropes, etc. Nylon is also used in ropes for rock climbing, making parachutes and fishing net. Now third is the polyester, synthetic fiber polyester. This type of synthetic fiber is obtained from water, coal, air and petroleum, but major is the petroleum. Polyester is made from repeating units of chemical known as esters. Polyester is easy to wash and it remains wrinkle free. It is quite suitable in making dress material. Polyester के ड्रेस मटेरियल भी बनते हैं और भी यूज़ इसके हैं, देखेंगे। पॉलिस्टर रिटेन्स, ये अपना शेप बनाए रखता है, एंड रिमेन्स क्रिस्प। पॉलिस्टर इज यूज्ड इन मेकिंग रोब्स, नेट्स, रेनकोट्स, जैकेट्स, एटसेट्रा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न अबाउट फाइबर्स टू फैब्रिक, डेफिनेशन ऑफ फाइबर्स, टाइप्स ऑफ and sources of fibers like plants and animal, natural fiber as well as synthetic fiber and its types. In next lecture we will start with definition of fabrics and different types of fabrics. Thank you class.